Good morning, class. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 12 of class 7. And the chapter name is Waste Management. Here is the learning objectives, type of waste, sources of waste, what you should do to control the sewage, chemical toilets. Let's start our chapter. All of you are familiar with the term waste. These are the unwanted materials which are discarded and thrown away because they are of no use to us. We generate these waste material every day from our daily life activities. For example, we cook food, take baths, read newspapers and wash our utensils. All these processes result in the generation of unwanted materials such as peels of vegetable, wastewater, old papers, etc. In fact, each life process performed by the human being also result in unwanted material. बेसिकली हम फैमिलियर हैं काफी, एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट. ये बेसिकली वेस्ट होता है क्या, जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, थ्रोन अवे कर देते हैं, जो हमारी किसी काम का नहीं है, उसको हम वेस्ट बोलते हैं. तो हम वेस्ट जो जनरेट कर रहे होते हैं हम यूजुअली एवरीडे ही कर रहे हैं अलग अलग प्रोसेस से. ठीक है, जैसे कि अलग अलग मे भी कह सकते हैं हम लाइफ एक्टिविटीज से भी. जैसे अगर हम कोई फूड कुक कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं बात, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, अपने यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं, तो ये सभी प्रोसेस करता है रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द वेस्ट. ओके, तो जैसे कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे पील्स ऑफ द वेजिटेबल, वेस्ट वाटर, ओल्ड पेपर्स, इवन जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं इन्वॉल्व, उसमें भी ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकाल रहा होता है. नाउ थॉटलेसली वी डंप द वेस्ट wherever we find a convenient place. These places include the dustbin, drain, road, street, backyards, park, river beds and even seas. तो हम जो डंप कर रहे हैं वेस्ट को, हम कहीं भी कर रहे हैं या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर कर रहे हैं, जैसे कि डस्टबिन हो गया, ड्रेन्स हो गए, रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, इवन सी भी हैं. This waste accumulate in the environment and causes the serious health problem in the human being. Waste has become a cause of concern for public health and environment. बेसिकली जो वेस्ट है वो अकमलेट हो जा रहा है इस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा, और वो कॉज कर रहा है बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग के अंदर. और वेस्ट जो है इस समय सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट बन चुका है हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग, बट बिफोर दैट लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट. Now the types of waste, we can divide waste into three types according to their physical nature. Physical nature के according हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. Gaseous waste, this is the waste which is discharged into the atmosphere in the form of gases. The smoke generated by the industries, automobiles and burning of fuel is a gaseous waste. ऐसा वेस्ट जो हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में, जैसे कि स्मोक अगर जनरेट हो रहा है इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल्स या बर्निंग ऑफ फ्यूल है, वो सब मेरे गैसियस वेस्ट है. नेक्स्ट मेरा सॉलिड वेस्ट. Solid waste is generated mainly from the household and commercial activities. These waste include the glass containers, plastic bags, packing materials, plastic containers, junk stale, food residue, old papers. और ऐसा वेस्ट जो हमारा यूजुअली हाउस होल्ड या कमर्शियल एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट. Liquid waste, the waste which is in liquid form is released along with water or any other liquid is known as the liquid waste. Some of the examples of waste are the wastewater, sewage from our houses, effluent from the industries, chemicals from the agriculture field and hot water from the thermal power plant. बेसिकली ऐसा वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो रिलीज कर दिया जाता है वाटर या कोई भी लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको मैं बोलता हूँ लिक्विड वेस्ट. और ये है मेरा लाइक वेस्ट वाटर हो गया, सीवेज हो गया, एफिलेंट हो गया इंडस्ट्रीज से, केमिकल हो गया एग्रीकल्चर फील्ड से, और हॉट वाटर थर्मल पावर प्लांट से. नाउ सोर्सेज ऑफ द वेस्ट. द टाइम इन विच वी लिव नोन एज द मैकेनिकल एरा. हम जिस टाइम में रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एरा. ओके, नाउ ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यूज ऑफ दीज न्यू technologies have improved our living standard, but these have also resulted in the large amount of waste. So जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर कर रहा है नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. बस इससे क्या हो रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी हमारे इंप्रूव तो कर रही है लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को, बट वो रिजल्ट कर रही है लार्जर अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन में भी. ओके, वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड बाय सेवरल सोर्सेज. A few sources of waste are industries, vehicles and automobile, household activities, agriculture waste, natural process.
और जो वेस्ट मटेरियल्स वो हो रहे हैं जनरेट बहुत से सेवरल सोर्स से, जैसे कि इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इवन हमारे नेचुरल प्रोसेस से भी, हॉस्पिटल और लैब से भी। ऑल ऑफ दीज सोर्सेज प्रोवाइड अस कंफर्टेबल लाइफ ऑन वन हैंड एंड अ डर्टी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड। जितने भी ये सोर्सेज हैं वो हमको एक तरफ तो कंफर्टेबल लाइफ देते हैं बट दूसरी तरफ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट भी देते हैं। What does wastewater contain? The wastewater from our home contains used water made up of soap, food particles, toothpaste, bits of paper, strands of hair, traces of oil, dust, urine, and human excreta. During the monsoon, rainwater also gets into the drain and adds silt, pebbles, leaves, and other plant material to the wastewater. The wastewater flowing through the drainage pipe is called the sewage. जो वेस्ट वाटर होता है जैसे कि हमारे होम से जो कंटेन करता है लाइक वाटर जो सोप में, जिसके अंदर सोप इंक्लूड हो, फूड पार्टिकल्स इंक्लूड हो, टूथपेस्ट, बिट्स ऑफ पेपर हो, स्टैंड्स ऑफ हेयर, ट्रेसेस ऑफ ऑयल, डस्ट, यूरिन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा भी। तो मानसून के टाइम पे जो रेन वाटर होता है वो ड्रेन में इकट्ठा हो जाता है, वो ऐड कर देता है सिल्ट, पेबल, लीव और अदर प्लांट मटेरियल। ओके, और जो वेस्ट वाटर फ्लोइंग करता है इस ड्रेनेज पाइप से, इसको मैं बोलता हूं सीवेज। Now, how does sewage water harm aquatic life? Household sewage contains the organic waste materials like human excreta, urine, other food particles. These waste provides nutrients for the microorganism. If sewage water is released into a lake or river, the microorganisms like bacteria, fungi, or algae grow in a large number. These organisms obtain nutrients by decomposing organic waste. To decompose waste, microorganisms use oxygen dissolved in the water. बेसिकली जो हाउस होल्ड सीवेज होता है जैसे कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, यूरिन है और अदर फूड पार्टिकल्स है। तो ये क्या करता है, ये जो वेस्ट है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो वाटर जो है, अगर सीवेज वाटर को मैं रिलीज कर दूंगा लेक या फिर रिवर में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई वो एक लार्ज अमाउंट में ग्रो करने लगेंगे। ओके, तो लार्ज अमाउंट में ग्रो करने लगेंगे तो उनको न्यूट्रिएंट किससे मिलेगा, डिकम्पोज करके एक ऑर्गेनिक वेस्ट को। और डिकम्पोज करने के लिए उनको क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है। Now, a large population of microorganisms in a water body would decrease the amount of dissolved oxygen in the water. They would also block sunlight, due to which aquatic plants cannot photosynthesis. Death of aquatic plant further reduce the amount of oxygen in the water. और ये जो लार्ज पॉपुलेशन हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो मेरी डिप्लीट करती जाएगी कंटिन्यूसली, ऑक्सीजन की कमी देता जाएगा। एक तरह से जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसकी कमी देता जाएगा। नाउ अब अगर उसकी कमी होने लग गई और साथ के साथ में वो ब्लॉक सनलाइट को भी ब्लॉक कर देगा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो अब ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और एक तरफ ब्लॉक भी कर देगा सनलाइट को, तो वो डेथ हो जाएगी एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक प्लांट की बेसिकली, जिससे रिड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन वाटर में। Most aquatic most aquatic animals use the oxygen dissolved in the water to live. Once the level of dissolved oxygen falls, fish and most other aquatic animals also begin to die. तो जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं जो ऑक्सीजन डिजॉल्व करती है वाटर के अंदर। अब जब लेवल ही डिजॉल्व ऑक्सीजन का कम होता जाएगा तो फिश और अलग एक्वेटिक एनिमल वो भी डाई करना शुरू कर देंगे। Every city and town produced a huge amount of sewage. Can we let sewage water directly flow into rivers and oceans? If sewer water is allowed to directly flow into water bodies, it would pollute these sources. Such water from lakes and rivers will not be suitable for the human consumption or for the growing crops. It will also harm all kind of plant and animal living in these water bodies. जो कोई भी सिटी या टाउन हो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस करता है, तो हम डायरेक्टली सीवेज वाटर को फ्लो, जो पानी के अंदर है फ्लो, हम या फिर रिवर के अंदर हमें डायरेक्टली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा अलाउ कर देंगे डायरेक्टली भेजने के लिए तो पॉल्यूट कर देगा ऐसे सोर्सेस को, जिससे कि वो सूटेबल नहीं रहेगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और ना ही क्रॉप ग्रो करने के लिए। What should we do to control the sewage? Sewage is the liquid waste produced by human which typically contains water used for the washing, laundry waste, feces, urine and other liquid or semi-liquid waste from household, municipal facilities,
इंडस्ट्री इट इज वन फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर। बेसिकली सीवेज जो है वो एक लिक्विड वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन से। तो बहुत सारी अलग अलग चीज उसके अंदर होती है, जैसे कि वॉशिंग, लॉन्ड्री, एक्सक्रीटा, यूरिन। ओके, और ये अलग अलग जगह से आता है, जैसे कि हाउस होल्ड से आता है, म्युनिसिपल फैसिलिटी से आता है, इंडस्ट्री से आता है, और ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर है। फॉलोइंग आर फ्यू मेजर्स that can be adopted to control the generation of sewage. Use flushes with the low capacity. Never pour the household products such as the cleansers, beauty products, medicines, automobile oil, and paint down in the drain. These contain the chemicals which the wastewater treatment plant cannot be able to remove. These should be properly disposed. कभी भी हमको हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि क्लींजर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल ऑयल और पेंट को ड्रेन के अंदर नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स कंटेन करता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो भी रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो इनको हमें बहुत प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए। Excess cooking oil, butter, meat fats, and plastic should be disposed of in the garbage can. These materials can clog the pipes and could cause the sewage to overflow in your home or in public areas. जो एक्सेस कुकिंग ऑयल है, बटर, मीट फैट्स और प्लास्टिक है, वो प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए गार्बेज कैन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल्स जो होते हैं पाइप्स को क्लॉग कर सकते हैं और सीवेज को ओवरफ्लो कर सकते हैं होम या पब्लिक एरियाज में। Fix leakage in your sewer pipes. You will not sewage to contaminate your drinking water, will you? It cannot also flow into your yard and breeding places of disease-causing insects such as flies, cockroach, and mosquitoes. जो लीकेज जहां भी हो रहा है सीवर पाइप्स में, उनको हमें फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी डिजीज जो भी डिजीज कॉज कर रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, वो वहां पे ना हो पाए। ओके, A city or a town produces millions of liters of wastewater every day. You have learned that only 2% of total water on the surface of Earth is fresh water. When fresh water is scarce, such huge amount of water cannot be wasted. The water that flows through the drains is taken to the sewage treatment plant where it is cleaned. This water can be used for the various purpose. एक सिटी या होम जो भी टाउन है वो प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे। सो हमने पढ़ा है कि केवल 2% ही मेरा टोटल वाटर है सरफेस के ऊपर जो फ्रेश वाटर बचा है। तो हम इसको ऑलरेडी इतना कम है फ्रेश वाटर, तो हम इतना ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस समय पे कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हैं जहां पे ये जो वाटर आता है वो क्लीन होता है। वो किस किस तरीके में यूज हो सकता है? मैनी तरीके में यूज हो सकता है, लाइक सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स द हार्नेस नेचुरल process to remove the non-water elements from sewage and to clean the water so that it can be safely returned to a river, estuary or the sea. तो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो वर्क करता है हार्नेस करने का नेचुरल प्रोसेस से कि वो रिमूव कर पाए सारे के सारे नॉन वाटर एलिमेंट सीवेज के अंदर से और उस वाटर को क्लीन कर पाए, जिससे कि वो सेफली रिटर्न कर दिया जाए वाटर रिवर में, एस्टुअरी में या फिर सी में। Sewage contains a lot of material that have to be removed before treatment begin. These include the paper, rubber, plastics, cotton and grit washed from the roads. सीवेज के अंदर बहुत सा ऐसा मटेरियल होता है जिसको पहले रिमूव कर देना चाहिए। ओके, ट्रीटमेंट से पहले ये पेपर ये हो गया पेपर, रबर, प्लास्टिक्स, कॉटन और ग्रेट। The larger items are removed by passing the sewage through a sieving device called a screen that traps anything larger than 6 mm in diameter. और सबसे पहले जो लार्जर आइटम्स जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं एक सीविंग डिवाइस से, जिसको मैं बोलता हूँ स्क्रीन। जो वो ऐसी डिवाइस है वो कुछ भी ट्रैप कर लेगी जिसकी भी डायमीटर जो है 6 मिलीमीटर से ज्यादा है। The screened sewage is then passed through a device that removes the grit and sand. All these materials are sent for the landfill. जो स्क्रीन सीवेज होता है वो पास कर दी जाती है डिवाइस जो रिमूव करती है ग्रिट और सैंड। A sewage treatment work separates solids from liquid by physical process and purifies the liquid by biological process. जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो वर्क करता है सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, एक फिजिकल प्रोसेस है, वो प्यूरिफाई कर देगा लिक्विड्स को बायोलॉजिकल प्रोसेस से। प्रोसेस में वेरी बट द फॉलोइंग वेस्ट स्ट्रीम इज टिपिकल। द प्रीलिमिनरी treatment stage to remove large solid, primary treatment to remove the fine solids,
secondary treatment to remove the dissolved substance, tertiary treatment to disinfect or remove the nutrients. Return of the water to the environment, sludge process and recycling. Wastewater treatment plant. The treatment of wastewater involves the physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का वो इन्वॉल्व करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि वो रिमूव कर पाए कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मैटर जो कंटेमिनेट करता है वेस्ट वाटर को. Wastewater is passed through bar screens. Large objects like racks, sticks, can, plastic packet, napkins are removed. वेस्ट वाटर को जो होता है वो पास किया जाता है सबसे पहले बार स्क्रीन से जिससे कि जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि रैक्स, स्टिक्स, कैन वो सब मेरे रिमूव हो सके. Water then goes to a grit and sand removal tank. The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. तो वाटर उसके बाद जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से जहां पे स्पीड जो होती है इनकमिंग वेस्ट वाटर की वो डिक्रीज कर दी जाती है जिससे कि वो अलाउ कर पाए सैंड, ग्रिट और पेबल्स को सेटल करने के लिए. The water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like faces settled at the bottom are removed. वाटर उसके बाद में अलाउड कर दिया जाता है सेटल इन ए लार्ज टैंक जो स्लोप्ड होता है टुवर्ड्स द मिडिल जिससे कि ऐसे सॉलिड्स जो फेसेस होते हैं वो सब बॉटम पे रह जाएं और वो रिमूव कर दिए जाए. दिस इज कॉल्ड द स्लज और इसको हम स्लज बोलते हैं. ए स्कमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस. वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर. और जो स्कीमर होता है वो रिमूव कर देगा फ्लोटेबल सॉलिड को और ग्रीस को जिससे कि वाटर जो क्लियर हुआ उसको हम क्लैरिफाइड वाटर कह पाए. द स्लज इज ट्रांसफॉर्म टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया. और जो स्लज होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सेपरेट टैंक पे जहां पे वो डिकम्पोज होता है बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया. The biogas produced in the process can be used as fuel or it can be used to produce the electricity. जो भी बायोगैस प्रोड्यूस हुई इससे इस प्रोसेस से उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Air is pumped into the clarified water to help the aerobic bacteria to grow. Bacteria consume the human waste, food waste, soap and other unwanted matter still remaining in the clarified water. उसके बाद में एयर पंप कर दी जाती है क्लैरिफाइड बैक्टीरिया में जो हेल्प करती है एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए. तो बैक्टीरिया जो होती है वो कंज्यूम कर लेगा ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट या सोप या अदर मटेरियल जो स्टिल रिमेनिंग है क्लैरिफाइड वाटर में. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top. उसके काफी घंटों बाद में सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स हुए वो सेटल हो जाते हैं बॉटम ऑफ द टैंक पे और एज एक्टिवेटेड स्लज द वाटर जो होता है उसका रिमूव कर दिया जाता है टॉप से. द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% ऑफ द वाटर. द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स. ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो मेरा 97% ऑफ वाटर होता है और जो वाटर रिमूव्ड हो जाता है बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और द मशीन्स. और जो ड्राइड स्लज होता है वो एज अ मैन्योर मैं यूज कर सकता हूं. द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर. It is discharged into sea, a river or into the ground. Nature cleans it up further. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine. जो ट्रीटेड वाटर जो होता है उसका काफी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है या फिर सस्पेंडेड मैटर और डिस्चार्ज कर दिया जाता है सी, रिवर या किसी भी ग्राउंड के अंदर. तो नेचर क्लींस कर देगा उसको फर्दर. समटाइम्स और ये नेसेसरी हो जाता है कि डिसइंफेक्ट कर दिया जाए वाटर को एक केमिकल से जिसको लाइक द क्लोरीन or ozone before releasing it to the distribution system. Now the purification of water, you will need a kitchen strainer, 2 large mouthed bottles with the lid, wheat flour, sugar, rice flour, milk, detergent, a small tomato, a mashed banana, a small boiled and mashed potato, a biscuit, a few pebbles, some dry soil, a small bucket and the water. Step 1. Add into a bucket a spoonful each of wheat flour, rice flour, sugar, some milk, a biscuit, mashed potato and banana, juice of 1 small tomato and teaspoon of detergent and mix with a long wooden stick. Add the 5 mugs of water to the mixture. You have prepared a mixture similar to the kitchen waste.
Fill one of the bottles completely with the mixture using a wooden ladle. Close it lightly with the lid. Mark it as a bottle 1. Do not open this bottle till the activity reaches its last step. Take another bottle and fill the 3/4 of it with the mixture. Add a few large pebbles and a handful of soil to it. The content of this bottle is similar to what flows in sewage pipes carrying household waste. Mark this bottle as bottle 2. Do not cover it throughout the experiment. Leave it undisturbed till the next morning. Step 2. Shake bottle 2 and empty its content into a strainer. The strainer works like the screen in the sewage treatment plant. It separates pebbles from the wastewater. Collect the water that filters out in a bucket and pour it back into the bottle 2. Leave the bottle undisturbed for about the 24 hours. Now step 3. Gently descend the liquid contents of bottle 2 into a bucket, leaving the solid matter at the bottom of the bottle. Empty the solid waste in a pot with soil. Label the pot and leave it undisturbed. Wash the bottle and pour back the descended water from the bucket back into the bottle. You have now separated the solids from the wastewater as it done in a sewage treatment plant. The pot, on the other hand, works like the digester of the sewage treatment plant. The microorganisms present in the soil in the pot decompose the solid waste sludge into the manure. Now, add 2 spoonfuls of dry soil to the bottle too. By adding soil, you are introducing microorganisms into the wastewater. Every 2-3 hours, shake the bottle vigorously. Every time you shake the mixture, you will be adding some air into it. Open the bottle after each shake, let the contents settle for a night. Final step. Gently descend the liquid contents of bottle 2 into a bowl without disturbing the sediment at the bottom of the bottle. Add a teaspoon of alum powder to the water in the bowl. Stir the water and leave it undisturbed for a few hours. The alum will kill the most of the microorganisms, settle the solid particles present in the water. Gently descend the water into another container and filter it using the folded piece of old cotton cloth. Now open the bottle 1 and compare its liquid content with the filtered water. Which one is clear? Septic tank and alternative arrangement for the sewage disposal. Many villages in our country are still not connected to common sewage treatment plant. In such places, a septic tank is used to treat the household sewage. मेरे ऐसे भी बहुत से विलेज हैं हमारे कंट्री के अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से. सो ऐसी प्लेसेस में सेप्टिक टैंक होता है वो मेरा ट्रीट करता है हाउस होल्ड सीवेज को. A large concentrate a large concentrate tank is built under the ground with the inlet and outlet pipe attached to it. The inlet pipe carries the household sewage to the tank. The solid matter from the sewage settles at the bottom of the tank. Bacteria present in the tank decompose the solid waste. The excess water flows out of the tank through the outlet pipe into the soil. Basically, एक लार्ज कंक्रीट का टैंक होता है जो बिल्ट हो जाता है अंडर द ग्राउंड, जिसमें एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप जो होता है वो अटैच कर दी जाती है. ओके, जो इनलेट पाइप होती है वो कैरी करता है हाउस होल्ड सीवेज को जो टैंक के अंदर जाता है, और जो सॉलिड मैटर होता है इस सीवेज से वो सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ द टैंक पे, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है टैंक के अंदर वो डिकम्पोज कर देते हैं सॉलिड वेस्ट को, और जो एक्सेस वाटर होता है वो फ्लो आउट ऑफ द टैंक हो जाता है किसी भी एक आउटलेट पाइप से जो सॉइल के अंदर. The decomposed solid matter must be removed from the tank periodically. जो decomposed solid matter है वो remove कर दिया जाना चाहिए टैंक से periodically. A septic tank is an on-site mini sewage treatment plant. It is suitable for places having the sandy soils at the outlet pipe gets blocked in clay the soils. जो सेप्टिक टैंक है वो एक ऑन साइट मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सूटेबल है प्लेसेस जहां पे मेरी सैंडी सॉइल होती है और जहां पे आउटलेट पाइप्स जो होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती है बेसिकली क्ले सॉइल के अंदर. अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस कैन इंस्टॉल एंड मेंटेन अ कॉमन सेप्टिक टैंक. एक क्लस्टर हो जाए अगर 4 और 5 हाउसेस का तो वो इंस्टॉल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है एक कॉमन सेप्टिक टैंक को. With a few modification, a septic tank can be converted into efficient biogas plant. और few modification से इस septic tank को मैं biogas plant में भी convert कर सकता हूँ. Next is chemical toilets. A chemical toilet use the chemicals to
disinfect the waste. These toilets are most commonly found in the aircraft. जो केमिकल टॉयलेट होता है वो यूज करता है केमिकल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए वेस्ट को. ओके, और जो टॉयलेट्स होते हैं मोस्टली फाउंड आउट होते हैं एयरक्राफ्ट में. अ सिंपल केमिकल टॉयलेट कंसिस्ट ऑफ अ सीट with a container with a solution of chemicals used to disinfect and deodorize the waste. Now, lack of sanitation can spread the disease. Many people in our country do not have access to sanitation facilities. They use open places such as the railway tracks, fields, dry river beds and playground to defecate. बहुत से ऐसे पीपल हमारी कंट्री में हैं जिनको एक्सेस नहीं है एक सैनिटेशन फैसिलिटी की. वो ओपन प्लेसेस पे लाइक द रेलवे ट्रैक्स, फील्ड्स, ड्राई रिवर बेड्स, प्ले ग्राउंड पे जाके डिफिकेट करते हैं. और ह्यूमन एक्सक्रीटा लेफ्ट ऑन द लैंड कैन कंटेमिनेट द वाटर सोर्सेस लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर. तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो लेफ्ट हुआ है लैंड के ऊपर वो इवन कंटेमिनेट भी कर सकता है वाटर सोर्सेस जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड वाटर को. द कंटेमिनेशन कैन कॉज द वाटर बॉर्न डिजीज सच द कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री. और ये इवन कॉज कर सकता है वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज द कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड dysentery. In some town and cities, there are open drainage system. Then open drainage system is a health hazard. It is not only a breeding place for mosquito and flies, but also spread various waterborne disease and contaminates the water source during the monsoons. और बहुत से ऐसे टाउन और सिटीज होते हैं जहाँ पे ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है. वो एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है. वो इवन इतना काफी बड़ा हेल्थ हजार्ड है. और वहां पे केवल ब्रीडिंग प्लेस ही नहीं है मॉस्किटो फ्लाइज की, बस ऑल्सो वो वाटर बॉर्न डिजीज को भी न्योता दे रहे हैं वहां पे कि वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कर जाए मॉनसून टाइम पे. नाउ डू नॉट dispose of water like tea leaves, food particle, oil paints, oil residue and paper in the household sewage system. हमें कभी भी हाउस होल्ड सीवेज सिस्टम के अंदर ये वेस्टेज को डिस्पोज नहीं करना चाहिए लाइक द टी लीव्स, फूड पार्टिकल्स, ऑयल पेंट, ऑयल रेजिड्यू. बर्न यूज और लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन योर गार्डन. तो बर्न यूज है या फिर लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे गार्डन में. पुअर केमिकल्स इनटू द ड्रेन्स एज दे पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर. केमिकल को हमें ड्रेन के अंदर पोर नहीं करना चाहिए बिकॉज वो पॉल्यूट करते हैं सॉइल और वाटर को. पोर द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड इनटू द ड्रेन एज दे कैन कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर. हमें पेस्टिसाइड्स को भी, जो भी लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी ड्रेन में पोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डोमिनेट कंटेमिनेट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को. रीच द पेस्टिसाइड कंटेनर नियर द वाटर सोर्सेस इंक्लूड द वॉल, wells, ponds and the rivers. Now, let's recall waste is an unwanted material which we throw. Wastewater is generated in homes, industry and agriculture field and in other human activities. This is called the sewage. Open drains are the harmful because they attract flies which can carry microorganisms to human beings and cause the illness. Sewage treatment is the process of removing the contaminants from the sewage to produce the liquid and solid suitable for discharge to the environment or for reuse. Now the glossary: waste, unwanted material which we throw away; sewage, the household wastewater from the kitchen and bathroom; sludge, the solid material produced during a sewage treatment; sewer, a pipeline for carrying of the drainage water and the sewage. Now student, it's the time for the practice. Liquid waste from house are called the sludge, smog, sewage, effluents. Basically, sewage. Non-biodegradable waste are glass, plastic bags, fruits, both A and B. Both A and B. Wastewater generated by industries is called the industrial effluents. Okay. Untreated sewage water contains dash microorganism. Basically, untreated, it will contain the harmful microorganism. In places where proper drainage is not available, the wastewater is collected in the septic tank. Okay. Dash contains a lot of materials that have to be removed from before the treatment can begin. Basically, sewage. Drains get blocked by dash and dash. Oil and plastic.
Okay, now take the correct. Open drainage is advantageous. No. Storm water pollutant come from only from the leaking cars. No. Suspended matter in sewage which settles in setting time is called the sludge. Yes. Sewage treatment consists of the four stages. No. A septic tank must be installed near a well to keep it clean. No. Okay. Now, very short answer type question. Write three good housekeeping habits. इसका आंसर आपको यहां से मिल सकता है दैट डू नॉट इन डू नॉट के अंदर से मैं तीन हैबिट्स ले सकता हूं. Name the major type of waste based on the physical state. Basically solid waste, gaseous waste and the liquid waste. What are the solid waste? So this answer you can take from this paragraph that it is mainly come from the household and commercial activities और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक बैग्स, पैकिंग मटेरियल्स और प्लास्टिक कंटेनर्स. ओके. What is a sludge? Basically, solid materials produced during the sewage treatment is called the sludge. Now, explain the term recycling the waste. See, what is recycle? Basically, जब हमारा waste होता है, ठीक है, जो भी हमारा waste होगा, उसको मैं अगर वापस से एक बायो प्रोडक्ट उसका ऐसा बना दूं या वापस एक ऐसा प्रोडक्ट बना दूं जिसको मैं यूज कर सकूं, जिससे कि मेरे जो बेसिकली जो रिसोर्सेस हैं वो बचे. ओके, तो उसको मैं बोलता हूं रिसाइकलिंग. Explain the function of bar screens in a wastewater treatment plant. Basically, these all questions I have already discussed in the class. So, just giving you reference from where you can note down the answer. For that answer, you can take from this paragraph. Basically, the pass through the bar screens और large object जो होते हैं वो removed हो जाते हैं. Now, how the untreated sewage is harmful. इसका जो आंसर आप इस पैराग्राफ से ले सकते हैं कि सीवेज वाटर से कैसे एक्वेटिक लाइफ में हार्म होता है. How are the sanitation and disease are related? Basically, this answer will come in this paragraph that the lack of the sanitation will spread the basically disease. Explain the functioning of the wastewater treatment plant. You can refer this whole paragraph जिसमें कि पूरा बताया गया है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या प्रोसेस होता है. Now, describe the harmful effects of the waste. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट के लिए आप रिफर कर सकते हैं टाइप ऑफ वेस्ट में जहां पे गैसियस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट बताया गया है, उसमें उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताए गए हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. So this answer you can refer in this paragraph to how the sewer basically sewage treatment is done. So thank you class.